Today we are taking lesson number 4, that is an Indian American woman in space, Kalpana Chawla. In 1997, an Indian American, Kalpana Chawla, was part of the international crew aboard the US Space Shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go to space. Sadly, the second mission in Columbia ended in tragedy. Now, Kalpana Chawla, everybody has heard this name. She was the first Indian woman to go to the space. She went up into the space. She was born in Haryana, but she married an American man. So that is why she is known as Indian American women. Before starting the chapter, let's do these exercises first. They have given you the meaning of space shuttle. That is, it is a spacecraft that is made for repeated space travel, जिसमें जैसे हम स्टेशन पे ट्रेन यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, सेम इज़ द केस हेयर ऑल्सो. द स्पेस क्राफ्ट इज़ यूज्ड टू गो टू द स्पेस. अंतरिक्ष में जाने के लिए हमें स्पेस क्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है. Now second is, they have given you certain words. You have to write the meanings. You can consult a dictionary also. I have given you the meaning here. Like first word is naturalized. It is known as adopted. Space is basically an area. Here it is अंतरिक्ष को space कहा गया है. Frontiers of space means borders. And she crossed all the borders of the space. Aboard is inside. Lift off का मतलब उठाना, raise करना. Take off is sometimes it is remove, but here lift off and take off, both of the words are used to lift the things. Like plane के लिए हम कहते हैं ना, plane ने take off कर लिया, यानी कि उड़ान भरना. Then is crew. Crew is members of the craft. जो भी craft में जितने भी लोग हैं उनको crew कहा जाता है. Then next is there are certain spellings like airplane, program. अब उन्होंने कहा है कि this is an American English. How they spelled in British English? British में हम program में double M कर देते हैं और airplane को हम aeroplane बोलते हैं British English में. So we will be discussing this later on in the exercises, the spellings of American as well as British English. We Indians, we follow British English. So next is the chapter. Now they have given you a news report of her death. ये जो first box के अंदर लिखा गया है, this is a news report of a newspaper when her spacecraft crashed. Tragedy in space, US Space Shuttle Columbia. In an unprecedented space tragedy, US Space Shuttle Columbia carrying Indian-born American astronaut Kalpana Chawla and 6 others. इसके साथ 6 और मेंबर्स थे कल्पना चावला के साथ, और इनका जो स्पेस क्राफ्ट है वो पूरा क्रैश हो गया. एंड इट क्रैश्ड वाइल इट वाज लैंडिंग. जब वो आसमान से, अंतरिक्ष से नीचे की ओर आ रहा था, धरती पर आ रहा था, वो तब क्रैश हुआ. ऑन सैटरडे 1 फरवरी 2003. कल्पना चावला की डेथ कब हुई है? 1 February 2003. The shuttle lost contact with NASA at about 9 a.m. सुबह 9 बजे के करीब नासा से जब ये उनको पता चला कि इनका जो स्पेस शटल है उसका कांटेक्ट उनके ऑफिस के साथ उनका ख़त्म हो गया था कांटेक्ट. As it came for landing, it was flying at an altitude of over 2 lakh feet and traveling at over 20,000 km per hour. This was the speed. Now Columbia had lifted off. Columbia जो है वो spacecraft का नाम है. It is not a name of a country here. It is the name of a spacecraft. उसने उड़ान 16 जनवरी 2003 को भरी थी. From the Kennedy Space Center, Florida. Florida is name of a place और Kennedy Space Center उस space center का नाम है. और ये ऑर्बिट पे 16 डेज़ स्पेस में रहा था स्पेस शटल, और वहाँ से जब ये वापस आ रहा था नीचे तब ये क्रैश हो गया. Now the story is that Kalpana Chawla
शी नेवर ड्रेम्ड ऑफ कि वो एक एस्ट्रोनॉट बनेगी. एस्ट्रोनॉट क्या है? एस्ट्रोनॉट इज़ अ पर्सन हु ट्रैवल्स इन स्पेस. शी बिलोंग टू अ विलेज इन करनाल. हरियाणा में करनाल एक जगह है. It was enough for her parents allowed her to attend and she did aeronautical engineering. जो लोग स्पेस में जाते हैं वो aeronautical engineering करते हैं and she did that. And she was graduated from Tagore School. After a Bachelor of Science degree in aeronautical engineering against great opposition from a father. अब उसके पेरेंट्स चाहते ही नहीं थे, स्पेशली फादर, कि वो कहीं बाहर जाए पढ़ने के लिए. But she went to United States and she did her masters there. She did her PhD in aerospace engineering. And Kalpana Chawla was the first Indian American women astronaut blast from the launch pad. और उसने blast from means to start. उसने start किया launch pad at Cape Carnival, Florida and participate in the successful mission in space. उसकी फैमिली ने सब ने उसको बहुत चेयर किया and they were very happy कि she has done this. Kalpana, she was born in Haryana and but was naturalized. Naturalized means adopted. उसने US citizen के साथ शादी कर ली थी जिसका नाम था जैन प्यारे. He was a flight instructor. वो इंस्ट्रक्टर था जो सिखाता था कि कैसे काम किया जाता है. Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine. Multi मतलब बहुत सारे. और उसको एक लाइसेंस दिया गया था. जैसे कार चलाने का लाइसेंस होता है, गाड़ी चलाने का लाइसेंस होता है, ऐसे ही इसको स्पेस क्राफ्ट चलाने का लाइसेंस मिला था. एंड दैट वाज सर्टिफाइड. सर्टिफाइड मीन्स वो एक लीगल लाइसेंस था. शी कुड फ्लाई एंड शी यूज ग्लाइडर्स ऑल्सो. ग्लाइडर्स होते हैं जिसमें इंजन्स के बिना जो फ्लाइट होती है, दैट इज़ ग्लाइडर्स. Qualifying as a pilot, Kalpana began to consider another challenge, applying to NASA's space shuttle program. She was hired as a research scientist. वो एक research scientist भी बन गई. 1994 she was selected by NASA for training as an astronaut. 1994 में वो एक एस्ट्रोनॉट बनी थी.